अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम अ प्रोग्रामर। कि प्रोग्रामर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और कोई डिग्री, कौन सी डिग्री ज़रूरत होती है। प्रोग्रामर बनने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है, आपको इंटरेस्ट होना लाजमी है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में। Becoming a programmer involves a combination of education, practice, and gaining relevant skills. इस वीडियो में आपको जनरल स्टेप बताऊंगा जिनके ज़रिए एक आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द बेसिक्स, गेन फेमिलियरिटी विद द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, computer science, and the different language technology and framework used in the industry. Choose your specialization, अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करें। चूज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ प्रोग्रामिंग यू वांट टू गेट इनटू, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बहुत से एरियाज हैं। आप अपने मर्जी का जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें उसे चूज करें और उसमें स्किल्स हासिल करें, लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, etc. लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर रेलेवेंट टू द स्पेशलाइजेशन। ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड कोडिंग बूट कैंप्स आर हेल्पफुल रिसोर्सेज। आजकल यूट्यूब पर बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल हैं जिनके ज़रिए आप ऑनलाइन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी सीख सकते हैं। यूडमी है और दूसरे चैनल यूट्यूब पे कोड विद हैरी, थापा टेक्निकल और कोड एकेडमी, ये सारे चैनल यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। डेवलप हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम कोडिंग लैंग्वेज स्किल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, critical thinking, time management, and work ethic. Build a portfolio. Start building project and contribute to open source communities to showcase your skills. Networking. Networking is important in any industries and programming is no exception. Attend meetup, hackathons, and conferences. Start applying. Once you have gained relevant skill, prepare and apply for job. Look for internship or junior developer role. In short, being a programmer is not an overnight achievement. It's take time, practice and patience. Keep learning, improving your skill, and always stay up to date with the latest technology and trends in the industry.